Yes, so welcome to the class, all of you. Hope all of you are doing good. So, again, in the class, we are going to discuss about mixtures in our today's class because we are doing uh, about the matter. Yes, we are discussing whether the matter around us is pure, है ना? तो इसके पहले की क्लास में इन द प्रीवियस क्लास हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड, व्हाट डू यू मीन बाय elements, isn't it? We have done this both the part what is an element and what is a compound in much detail in the previous class. We have taken some examples also from that. Yes, that these are the pure substances, isn't it? Elements and the compounds both are the pure substances or pure form of matter, I can say. But if I am going the other another side of the matter, that which is not pure, so they are what, they are mixtures, है ना? जो मैटर प्योर फॉर्म नहीं है और प्योर मैटर जिसको हम नहीं बोलेंगे, yes, that is what it is a mixture. So today in the class we are going to discuss about this, that is what do you mean by mixture. Mixture क्या है? Anyone? We know the mixture, na? We have, so not mixture that we in the kitchen it is there, it is mixer. Yes, this is mixture that we are going to discuss. So mixture, we know there are a lot of types of mixture where we mix salt in water, or when we want to make lemonade water, there also we mix the lemon, salt, water, sugar in that way, isn't it? So there are different kinds of mixture. We know many mixtures. So what are this mixture? है ना, केमिकली और केमिस्ट्री में यदि हम इसको पढ़ना चाहेंगे तो व्हाट इज इट? सो स्टूडेंट्स, अ मिक्सचर इट इज अ सब्सटेंस which consists of two or more elements or compounds that are not chemically combined together. Now, if you remember what is compound, यदि आपको पता है कि compound क्या है, जो हमने पहले की क्लास में पढ़ लिया है ना, previous class we have discussed what is compound. If you remember all the characteristics points of a compound and then you see the mixture, you will get the differentiation point. आप उसमें से differentiation point बहुत properly निकाल सकते हो. हमने कंपाउंड में पढ़ा था दे आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, इफ यू रिमेंबर. बट व्हाट एम आई सेइंग हियर? द मिक्सचर इज अ सब्सटेंस consist of two or more elements or compounds, yes, which are not chemically combined together. Remember this thing, है ना? So this mixture can be कंबाइन फिजिकली इन एनी प्रपोर्शन, है ना? कोई फिक्स प्रपोर्शन रहेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. इट कुड बी ना एनी प्रपोर्शन. जबकि कंपाउंड यदि आप देखोगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है दे विल बी देयर इन अ फिक्स प्रपोर्शन, इजंट इट? सो दिस इज वन थिंग. देन दिस मिक्सचर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकते हैं. आई थिंक आप लोगों को पता है, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस और heterogeneous. This also a small difference it is there. This also we have done in our previous class, है ना? तो homogeneous mixture जब बोल रहे हैं हम लोग, that means जो constituent रहेंगे, जो substances रहेंगे, उसमें वो पूरी तरह से mix हो गए. हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. जैसे यदि मैं नमक मिला दूँ पानी में, इफ आई मिक्स or if I add salt in water and then I mix it up, yes, after sometimes you cannot see salt there, है ना? So that is completely dissolved हम बोलते हैं. So उससे क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन आ रहा है. We cannot separate or we cannot see it in a different layer or like that. तो उसको हम बोलेंगे such mixtures is called as a homogeneous mixture, isn't it? So what is given here? A mixture is a homogeneous when substances are completely mixed together in uniform composition. Remember, yeah, uniform composition, and they have same property in its every part. आप यदि आप सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन का या मिक्सचर को देखोगे तो वो जितना भी मिक्सचर है, सपोज इफ दिस इज अ ग्लास of half filled with water, there in that I have added salt. Yeah, now it has become a mixture, it is mixed, so you cannot see the salt. But in every part of this solution,
ओके, हर एक पार्ट आप देखोगे तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर का जो प्रपोर्शन रहेगा, यस, वो सेम रहेगा और सेम प्रॉपर्टी इट विल हैव इन ईच एंड एवरी पार्ट देयर. सो यू रिमेंबर दिस थिंग. गॉट इट? सो दिस इज what do you mean by homogeneous mixture. Then constituents of homogeneous mixture do not show any boundaries of separation. जैसे मैंने बताया कि कोई भी separation की boundaries आप नहीं देख सकते हो, सारा एक जैसा दिखता है, isn't it? And one more thing, all homogeneous mixtures are solutions. This is also important. जो होमोजीनियस मिक्सचर्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दे ऑल आर सोल्यूशन. दैट्स वाई यदि आप देख रहे होगे मैं जो बोल रही हूँ सॉल्ट इन वाटर, आई एम सेइंग सोल्यूशन देयर, isn't it? So all homogeneous mixtures are what? Solution. Similar example I can say water and sugar solution. Then one more example you can write alcohol. Yes, alcohol and water, that is also a solution. Yeah, it is again a homogeneous solution. So these all forms the homogeneous mixture there. Yes, why they are we will say that they are homogeneous mixture. These solutions are homogeneous mixtures because of this property. क्या property है? Because they have uniform composition, है ना? उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड दे ऑल्सो डू नॉट शो एनी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. सो देर आर सो मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर एज आई गिवन यू अल्कोहल एंड वाटर. और कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कोई सॉल्ट सोल्यूशन आई हैव ऑलरेडी गिवन, देन यू कैन टेक इट एज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इजंट इट? Copper sulfate solution is there, one solution that we can make or we can say that it is a homogeneous solution there, isn't it? Soda water, है ना? Soda water up, many people they drink this. This is again a homogeneous mixture. Okay, petrol, students, if I say an example of petrol, it is also homogeneous. Okay, and if I talk about air, there I will specifically say unpolluted air, जिसमें pollution नहीं होगा. Yes, ये सारे examples आप ले सकते हो homogeneous mixtures के. Yes, these all are the examples of homogeneous mixture. If I talk about sugar solution या फिर any other solution like salt solution, okay, तो ये solution क्या सेपरेट हो सकते हैं? कैन वी से दैट दे आर सेपरेटेड फिजिकली? यस स्टूडेंट्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन और इट कुड आल्सो बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, है ना? सो दिस यू शुड रिमेंबर, दैट मीन्स दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. सपोज the question is asked like how a solution is considered as a mixture. So this question is on the basis of this question is on the basis of this point. ये point के basis पे जो कि मैंने लिखा है all homogeneous mixtures are solution. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि how a solution is considered as a mixture and not a compound? ओके, हम सोल्यूशन को मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं और कंपाउंड क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों? इफ इन प्रिपरेशन ऑफ अ सोल्यूशन स्टूडेंट्स, हीट इज यूजुअली इवॉल्व और एब्जॉर्ब. ना, दिस इज अ पॉइंट. यदि सोल्यूशन बनाने में हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है तो हम वो सोल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहते हैं, उसको हम कंपाउंड क्यों नहीं कहते? वाई? बिकॉज एक्चुअली वाई दिस क्वेश्चन इज देयर, because compound have the property. compound की एक property होती है कि while preparation of the compound heat is generally evolved और it is absorbed, है ना? या तो exothermic होगा या तो फिर endothermic होता है. this is for compound, but this property is not applicable for mixture. तो जब solution ये property दिखा रहा है तो हम उसको mixture क्यों बोलेंगे, उसको compound क्यों नहीं बोलेंगे? yeah, so definitely students, this is agreed that heat is evolved or absorbed generally while preparing the solution there. But because the solution can be separated into its physical components
by physical method. As I told you, if I talk about sugar solution, I can separate it through distillation, I can separate it through evaporation, है ना. So this is one point, that the solution can be separated into its physical component by physical methods. Also it shows the property of its constituent. शुगर सोल्यूशन या कोई भी सोल्यूशन यदि हम लेंगे तो उसमें उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी भी वो दिखाएगा. यस, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. यस, कंपोजिशन कैसा रहेगा? वेरिएबल रहेगा. इन एनी प्रपोर्शन यू कैन डू दैट, एंड इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट. यदि ये सारे पॉइंट्स है विच फेवर्स दैट, दिस शुड बी अ व्हाट? mixture and not a compound. Yes, it is having one point, एक point favor कर रहा है कि it could be a compound, but it is usually evolved, not always. Yeah, but ये सारे जो points है which are showing that it should be a mixture, this is completely applicable for the solution, और इसीलिए हम solution को a mixture consider करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद में रखना है, तो हम याद, दिस यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इजंट इट. सो हम बोल सकते हैं कि सोल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. नाउ वन मोर होमोजीनियस मिक्सचर, इट विल बी एन एलॉयज, है ना. एलॉयज को भी हम होमोजीनियस मिक्सचर कंसिडर करते हैं. नाउ व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज क्या है? when anytime if two metals, या दो से ज़्यादा मेटल्स एक साथ मिक्स हो गए, या तो फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल मिक्स होगा, तो उससे जो भी बनता है हम उसको बोलते हैं एलॉय, है ना. बहुत सारे मेटल्स है जो एक से ज़्यादा मेटल से बन रहे हैं, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो उसको हम बोलते हैं एलॉयज. दैट मीन्स वो प्योर एक सिंगल मेटल नहीं रहेगा, इट विल बी अ मिक्सचर. यस, ये alloys भी, it also shows the property of its constituent. Yes, the alloys also are mixed in different composition. अलग अलग composition में mix हो सकते हैं उसमें metals या फिर non metals, और they cannot be separated into their components by physical method. Got it? And that's why I can say that alloy is also a homogeneous mixture. I hope this is clear. Like example, if I talk about brass, यदि मैं brass की बात करूँ, so what is it? Brass, it is a mixture of you can take zinc and copper. Zinc और copper का mixture है. या जिंक कितना रहेगा? 30% जिंक रहेगा, नियरली, आई एम टॉकिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेट, एंड नियरली 70% इट इज द कॉपर. सो दिस टू कंस्टिट्यूएंट, दे आर नॉट इन एन इक्वल प्रपोर्शन, डिफरेंट कंपोजिशन में है ना. तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ, और ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ब्रास इज व्हाट? ब्रास एक एलॉय है. आई होप दिस इज क्लियर. So this is about your homogeneous mixture. इसके बाद में देखेंगे what is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture, again the mixtures in which the substances remain separate, है ना. जैसे मैंने बताया, सपोज आप सैंड और वाटर ले लो, है ना, या फिर सैंड और सॉल्ट ले लो. आप उसका जब मिक्सचर बनाओगे तो आप इजीली देख पाओगे, सॉल्ट आपको अलग दिखेगा, सैंड आपको अलग दिखेगी, है ना. तो सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कंपोजिशंस इन डिफरेंट पार्ट्स. आई होप दिस इज क्लियर. या so the mixtures in which the substances remain separate, having different properties and different compositions, yes, in different parts, we call it as a heterogeneous mixture. इसमें क्या होता है? heterogeneous mixture में एक substance, यदि दो substance mix हुए ना, तो one substance is spread throughout the other as small particles, droplets or bubbles you can say, है ना. या liquid या gas रहा तो आप droplet और bubbles के तरह पे देखोगे, solid रहा तो you can see as a particle. So one substance is spread throughout the other as small particles, droplets or bubbles. Okay,
कंस्टिट्यूएंट्स जो रहेंगे वो मिक्सचर के, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के, दे शो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। वेरी गुड एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, शुगर एंड सैंड लो आप, या फिर सॉल्ट एंड सैंड ऑल्सो यू कैन टेक, isn't it? This is a heterogeneous mixture, students. Then if you take chalk in water, chalk powder water में डाल दो, you can see easily it is not going to mix completely, है ना, आपको chalk का particles अलग दिखेंगे, water अलग दिखेगा, तो both the constituents you can easily or visible you can see the boundaries of separation there. Then if you mix, or you can take a mixture of petrol and water, इसमें भी आपको अलग अलग दिखेगा, है ना, ऑयल एंड वाटर, दैट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. Milk, students, can I say it is a heterogeneous? Yes, it is also a heterogeneous mixture. Actually it is a mixture of what? मिल्क में आपको रहेगा वाटर रहेगा, प्रोटीन्स है, फैट्स है, isn't it, sugars है, विटामिन्स है. So but you will say that ma'am, when we see the milk it looks homogeneous, वो तो एक ही जैसा दिखता है ना, isn't it? But no, students, I'll tell you about this why we take milk as a heterogeneous in our next अगली क्लास में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जब हम solutions colloids और suspension के बारे में पढ़ेंगे. I'll let you know why we take milk here as an example. Okay, so but for now remember it is again a heterogeneous mixture. Then you can also take an example of salt and sulfur, as well as ink also. Ink रहेगी ना, it is also a example here of a heterogeneous mixture. I hope this is clear, है ना. So from this we can say easily that what, most of the mixtures are heterogeneous. Okay, remember most of the mixtures are heterogeneous. So I can write here most of the mixtures are heterogeneous. Homogeneous कौन रहेंगे? If it is a solution, isn't it? If it is a solution, or if they are the alloys, they are homogeneous. यदि solution और alloys की बात हो रही है तो आप बोलोगे कि it is a homogeneous mixture, or else most of the mixtures they are what? They are the heterogeneous. I hope this is also very much clear to all of you. Now we will just very fast we will see the characteristics of mixture. Just a minute. Yeah, we will see the characteristics of mixture. They can ask you the questions on that, है ना. Characteristics of compound क्या है, characteristics of elements क्या है, what are the characteristics of mixture. So you should remember all this. Not on the सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे इसीलिए नहीं, बट क्या होता है ना, यदि हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है किसी भी चीज़ की तो उसके रिलेटेड हम कोई भी आंसर दे सकते हैं, और उसके रिलेटेड हम जब पढ़ेंगे तो हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि नहीं, इफ़ दिस इज़ लाइक दैट then this is going to be mixture. But yes, if it is not this thing, then it could be the compound also. Yeah, so the characteristics could be, it is always important. Not for this chapter, always remember, कोई भी आप main part पढ़ रहे हो उसके main points, characteristics points, important points, you should always remember that, isn't it? Come on. Now if I go with the characteristics of mixture, पहला क्या है, different constituent of mixtures combined physically in any proportion by weight. सबसे important part मैंने definition में भी बताया था कि जो constituent रहेंगे, है ना, वो किसी भी proportion में combine होंगे. जैसे हमने alloys की बात की तो एक 30% एक 70% है ना. यदि मैं sand और salt का mixture लेती हूँ, so I can take any proportion of sand, I can take any proportion of salt. Similarly, if I take a homogeneous mixture also, any proportion can be there. There is not necessary that the fixed proportion will be there for a mixture. Okay. दूसरा है, no energy change takes place. Like there was that's why there was a question that why we considered solution as a homogeneous mixture, जबकि वहाँ पर energy change होती है, उसको हम compound क्यों नहीं लेते हैं, है ना.
क्योंकि मिक्सचर में एनर्जी चेंज नहीं देखी जाती है. द हीट इज neither evolved or it is not absorbed also generally. Okay, so no energy change takes place during the formation of mixture. Third characteristic is the constituent do not lose their identical property. जो कंस्टिट्यूएंट रहेंगे वो अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, उसकी खुद की आइडेंटिटी, यस, वो लूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लेती हूँ आयरन और सल्फर का मिक्सचर. ओके, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन एंड सल्फर, iron fillings and sulfur. Okay, if I am mixing them in this, by making the mixture of this, when I take a magnet, मैं magnet को यदि ले जाऊंगी और वो mixture के पास रखूंगी, so what I will notice, I will see that all the iron fillings gets attracted towards this magnet. यानी आयरन ने अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी को लूज नहीं किया है. इट हैज दैट प्रॉपर्टी दैट इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट. सिमिलरली सल्फर जो है, यदि हम उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करेंगे, सो इट डिसॉल्व्स देयर. सो सल्फर इज ऑल्सो नॉट लूजिंग और इट हैज नॉट लॉस्ट इट्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टी. जबकि अभी तो वो दोनों मिक्स हो गए हैं, फिर भी उन्होंने अपनी खुद की आइडेंटिकल प्रॉपर्टी को लूज नहीं किया है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर. गॉट इट? देन the constituents are easily separated by simple physical means, just like distillation as well as filtration. Got it? The mixture can be homogeneous or heterogeneous in nature. या मिक्सचर कैसे रहेंगे? मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर. Got it? So on the basis of this 5 characteristics, can we make a difference between mixture and compound? क्योंकि ये 5 चीज़ हमको मिक्सचर की पता है, उसका आप उसके रिलेटेड आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. आई होप नाउ यू कैन डू दैट. This is an important question about the mixture and compound, because if you know the differentiate point, that means you know the characteristics of both. आपको यदि उसकी characteristics पता है, आप उसको easily differentiate कर सकते हो. और इसी के basis पे, yes, यही difference points के basis पे we can also compare students mixture of iron and sulfur and compound of iron and sulfur. देखो आयरन और सल्फर ही है, बट एक हो गया मिक्सचर और एक हो गया कंपाउंड. सो दोनों चीज होने से दिस बोथ नेम, वन देयर इज अ मिक्सचर एंड द अनदर नेम विच कम्स अंडर द कंपाउंड, इज द प्रॉपर्टीज विल बी चेंज. डेफिनेटली द प्रॉपर्टीज विल बी चेंज फॉर द बोथ, बिकॉज वन इज गोइंग टू बी मिक्सचर एंड अनदर इज गोइंग टू बी अ कंपाउंड. चलो वी विल डिस्कस दिस थिंग. But yeah, differentiate is more easy there. So first we will go with the differentiation between the mixture and compound. I have given you the table only. What can you see here, students? Just a minute, I'll change. Yeah. If I talk about compound की यदि बात करते हैं, so compound कैसे बनता है? When 2 or more elements, isn't it? जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में इन अ फिक्स प्रपोर्शन, और वो भी केमिकली कंबाइन होते हैं, यस, इन अ फिक्स प्रपोर्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इसीलिए आई हैव हाईलाइटेड और आई हैव मेड इट बोल्ड. दे आर कॉल्ड एज अ कंपाउंड. इफ आई टॉक अबाउट मिक्सचर, अभी अभी हमने पढ़ा मिक्सचर में 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, कंपाउंड भी हो सकते हैं, यस, दे ऑल्सो कंबाइन टुगेदर. How? Physically. Here, what was that? Chemically. Yes. But in a mixture, they can combine physically in any proportion. The condition is in any proportion, but in the compound, the condition is in a fixed proportion by weight. Got it? This is a very important difference. उसके बाद में compound का देखेंगे तो properties of compounds are entirely different from its constituents. That means जो constituents है वो अपनी property lose कर देंगे जब वो compound बना देंगे. जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने compound पढ़ा था, I've given you an example of water, है ना. water एक compound है, लेकिन
जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुद की अलग अलग जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी वो लूज कर देते हैं व्हेन दे फॉर्म अ water molecule or water compound, sorry, water as a compound when they are forming, है ना. I have told you combustible which helps in a combustion, isn't it? But water, यदि हम ऐसा वाटर देखेंगे तो दोनों प्रॉपर्टी गायब, है ना. So it lose, the constituent lose their identical property in a compound, but in a mixture the constituents retain their property. Just now I had given you an example of iron and sulfur का mixture जो था, है ना. Then the third is the constituents of compounds cannot be separated by simple physical means. Yes, but here they can be separated by simple physical means. ठीक है. तो कंपाउंड कैसे सेपरेट होगा? कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट सेपरेट हो सकते हैं, बट इट कुड बी बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. नाउ कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, whereas the mixtures can be homogeneous or heterogeneous. Again an important point. Then energy is usually given out or absorbed during the preparation of compound. Compound बनाने में energy या तो given out होगी या तो फिर absorb होगी, okay. But mixture में neither energy is given out or absorbed. Got it? Now compound has a fixed melting point and boiling point. Fixed रहेगा melting point और again that means एक definite temperature पे melting and boiling it will be there. So there is a fixed melting and boiling point for a compound, whereas mixture does not have a fixed melting and boiling point. How many points we have discussed? अभी तक हमने 6 point discuss किया. I have so many. I think now you are getting, अभी समझ में आ रहा है क्या difference है compound और mixture का. This is a very basic thing when we are doing the chemistry. हमको पता रहना चाहिए. That's why I am taking it in this much of detail, students. Okay. Now some more points we can. Okay, sorry. If I go with, I think we have taken all the points. Yeah. Just a minute. Yeah. So total 6 points we have taken. I don't think there is some other points that I am missing. हमने शायद सारे points ले लिए. अभी तक शायद ऐसा कोई point नहीं है जो हमने miss किया, isn't it? So this 6 point of differentiation for the compound and mixture is there. Now, the previous question, one more question was there that I have given you. If I want to now compare between a mixture of iron and sulfur and compound of iron and sulfur, can I make a comparison between them? On the basis, यदि मुझे characteristics पता है, now I know the differentiation between the mixture and compound also. So can I compare between the mixture of iron and sulfur and compound of iron and sulfur? Yes, we can. Now I will just give you some points. Students, इसी तरह से आप और भी यहाँ पे जैसे आयरन और सल्फर की बात की, इसी तरह से और कोई भी आपको पॉइंट दे के आपको इस तरह से कंपैरिजन पूछे, so you can compare if you know the differentiation point, है ना. So I am just giving, we will just try to write it down in only short way. You listen it carefully. यदि आपको चाहिए, you can write in your notebook. Okay. If I compare mixture of iron and sulfur, yes, यदि मैं mixture लेती हूँ iron और sulfur का, and if I compare it with what? Compound of iron and sulfur. कंपाउंड आयरन एंड सल्फर का जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज आयरन सल्फाइड. उसको हम लिखते हैं आयरन सल्फाइड. ओके. बट मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर वी नो इट इज मिक्सचर ओनली. दिस इज द डिफरेंस देयर. ओके. नाउ सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, इफ इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, आप देख सकते हो आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर रहेगा. So it is a heterogeneous. Yes, it is heterogeneous in nature. क्यों? Because the two constituents, that is iron and the sulfur, they are easily visible
Yes, in a form of yellow particle and gray particle. Got it? But if I go for a compound of iron and sulfur, that is iron sulfide, it is homogeneous. अब आप बोलेंगे मैम how it is homogeneous? Because when you will see this compound students through the magnifying glass, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी इसको देखोगे तो आपको कोई भी पार्टिकल सेपरेटेड नहीं दिखेंगे. आयरन के अलग या सल्फर के अलग ऐसा आपको अलग से पार्टिकल नहीं दिखेगा वो कंपाउंड में. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आयरन सल्फाइड इज अ compound and it is a homogeneous in nature. Got it? Now second point we can write it down. As I told you the separation, जैसे when magnet is brought, yes, when magnet is brought near the mixture, what will be seen, क्या देखेंगे हम लोग, that the iron particles stick है ना, it sticks to the magnet. इस तरह से we can say that it has not lost its property as well as it can be separated from sulfur, है ना, stick to the magnet and separated from sulfur. इससे क्या प्रूव हो रहा है? We can say the mixture separated by simple physical means. Yes, thus mixture separated by simple physical means. Got it? इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर सेम चीज करूँ, yes, if magnet is brought near the compound, जब आयरन सल्फाइड कंपाउंड के पास हम मैग्नेट लेकर आएंगे, none of the iron फिलिंग्स और पार्टिकल्स स्टिक टू द मैग्नेट. वो मैग्नेट में जाके स्टिक ही नहीं करेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट अपना आयरन की, बट इट विल नॉट स्टिक टू इट, isn't it? Also, one more thing, if you want to dissolve, if this carbon disulfide solution cannot separate the sulfur from the compound also, यदि कार्बन डाइसल्फाइड को हम डालेंगे ना तो वो इसमें से उसको सेपरेट नहीं कर पाएगा, किसको, सल्फर को. दैट मीन्स व्हाट वी कैन से द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड. दस वी कैन से दैट कंस्टिट्यूएंट्स cannot be separated by physical means, है ना. And also one more thing, and we can say, and they have lost their identical property, or they lose their identical property. Can we write this thing, है ना. जबकि मिक्सचर में हमने देखा है कि इट इज नॉट लूजिंग इट्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टी. आयरन अपना बराबर इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एज वेल एज द सल्फर, इट विल मिक्स, isn't it? यदि कार्बन डाइसल्फाइड की हम बात करेंगे, यस वो सेपरेट कर सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं होगा. सो आई विल राइट वन मोर पॉइंट, इट इज सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स एंड द कंस्टिट्यूएंट्स have do not lose their identical property. तो डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पे ही मैंने ये दो अलग अलग
पार्ट कर लिए. यस, दो डिफ्रेंसिएशन हमने बता दिया. सो दिस आर द 2 पॉइंट्स. थर्ड आई कैन से दैट यस, मिक्सचर यदि बन रहा है आयरन और सल्फर का, देयर विल बी हीट इज नीदर evolved or absorbed. ठीक है. जब आयरन फिलिंग और सल्फर जब मिक्स होते हैं ना, तो उस समय में वो मिक्सचर जब बन रहा है उस समय में देयर विल बी नो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब. बट व्हेन द कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फर इज फॉर्म, और आयरन सल्फाइड जब बन रहा है उसमें हीट इज गोइंग टू बी इवॉल्व. होगा कि नहीं होगा? Lot of heat and light is produced. Yes, so I can write here while producing your iron sulfide compound, what can you say there? At that time, lot of heat and light is produced. Got it? So ये भी एक डिफ्रेंसिएशन पॉइंट हो गया या कंपैरिजन पॉइंट हो गया. Got it? Now we will take one more point there. If I am talking about again mixture of iron sulfur, and another is compound of iron and sulfur, है ना. So if I am talking about this also, one more point we can make for the comparison. कौन सा point ले सकते हैं? Melting and boiling point. Mixture, if it is there, it does not have what? Fixed melting point and boiling point. Yes, it does not have fixed melting point and boiling point. So this is also a property of a mixture. जबकि आयरन सल्फाइड कंपाउंड में it has fixed melting point and boiling point, है ना. melting point और boiling point fix रहेगा. boiling point, remember this thing. Here it is point. One more comparison I can make, like in preparing the mixture of iron and sulfur, you can use any proportion of iron and sulfur. कितना भी proportion ले सकते हो, कोई fixed proportion नहीं रहेगा. Yes, so I can write here any amount of iron filling can be mixed with sulfur powder. ठीक है, with sulfur powder to form a mixture. to form mixture. ठीक है, तो मिक्सचर का वही एक प्रॉपर्टी थी कि द प्रपोर्शन इज नॉट फिक्स. तो यहाँ पे भी कंस्टिट्यूएंट का प्रपोर्शन कोई फिक्स नहीं रहेगा. जबकि यदि मैं आयरन सल्फाइड कंपाउंड की बात करूँ, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग. yes, it is prepared by combining what? By combining iron and sulfur in a fixed proportion, students. yes, यहाँ पे एक प्रॉपरली फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट रहेगा जिसको लेके आप आयरन और सल्फर को कंबाइन करके उसका कंपाउंड बनाओगे. आई होप दिस इज क्लियर. या वन मोर एंड आई थिंक लास्ट पॉइंट वी विल ऐड. यदि हम आयरन एंड सल्फर मिक्सचर को डाइल्यूट HCl यदि हम ऐड करते हैं, yes, on adding dilute hydrochloric acid, yes, HCl is hydrochloric acid, to the mixture, to this mixture, that is mixture of iron and sulfur, क्या होता है? You can see that the iron reacts with and releases hydrogen gas. Yes, but sulfur
सल्फर रिएक्शन में पार्ट नहीं रहेगा, सल्फर इज अनअफेक्टेड। जैसे सपोज मैं आपको सपोज आई टेक Fe आयरन है ना प्लस S द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, इसमें यदि मैं ट्वाइस HCl विच विल बी द डाइल्यूट HCl यदि मैं उसको डालूँ उसमें, तो दिस आयरन इट विल रिएक्ट विद दिस क्लोराइड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे FeCl2 तो बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट भी होगा, लेकिन ये सल्फर जो है ना वो अनअफेक्टेड ही रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, इट इज अनरिएक्टेड। गॉट इट? आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। बट यदि मैं यहाँ पर यही चीज करूँ, इफ आई एड डाइल्यूट HCl टू द कंपाउंड, यस ऑन एडिंग dilute HCl, yes, to this compound of iron and sulfur or iron sulfide, what happened? A colorless, you can see a colorless gas with rotten egg smell is released। ठीक है, ये गैस होगा कौन सा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब ये आयरन FeS iron sulfide, if I am talking na, this is iron sulfide plus twice HCl, again it is dilute, so you will get FeCl2 plus H2S। तो हमने ये क्या देखा यहाँ पर, और ये H2S आगे में और रिएक्ट होगा, isn't it? सो हमने क्या देखा इसमें कि आयरन सल्फाइड कंपाउंड के और सभी कंस्टिट्यूएंट्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। दिस प्रूव्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड टेक्स पार्ट्स इन अ reaction, whereas in the mixture iron is taking part in a reaction but sulfur is not taking part in that reaction. So you can say that all the constituents of the mixture, not necessary that they are going to take part in a chemical reaction. I hope this is clear. Yeah, also one more point आप लिख सकते हो कि properties of compound is different from the इंडिविजुअल आयरन एंड सल्फर। यदि मैं कंपाउंड की बात करूंगी तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी, वो तो हमने पहले भी देख लिया है, isn't it? So I hope this is very much clear to all of you students. So on this basis you can easily compare. Why I have given you this comparison, ये समझ में आया ना? हमको ये प्रूव करना है कि कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट, सभी कंस्टिट्यूएंट्स रिएक्शन में पार्ट लेंगे, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे। शुड आई राइट इट डाउन? Yes, thus all constituents of compound takes part in chemical reaction. Yes, whereas हम यहाँ लिख सकते हैं all constituent does not take part or do not take part in a reaction. Is this much clear? So in this way हम लोग किसी भी चीज में यदि कंपैरिजन पूछा है तो अब इस तरह से कंपैरिजन ले सकते हो। This is also an important comparison. You should learn the comparative point, students. Now the last part that I wanted to discuss with you, as we have seen, अभी तक हमने जैसे देखा कि मिक्सचर्स होमोजीनियस हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं ना। We have seen some examples also. लेकिन यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मिक्सचर की तो हम उसको डिफ्रेंशिएट, हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। जैसे कि यदि मिक्सचर दो सॉलिड से बना है तो क्या एग्जाम्पल रहेगा? यदि मिक्सचर लिक्विड और सॉलिड का बना है, सो हाउ विल बी इट्स नेचर ऑफ अ मिक्सचर, होमोजीनियस रहेगा कि हेट्रोजीनियस रहेगा? तो in a very short way I am explaining you that, so we can write that on the basis of physical property of mixture we can classify them as
suppose I am taking as a constituents of mixture, जैसे हम ले सकते हैं कौन से दो कंस्टिट्यूएंट यदि हम यूज कर रहे हैं, isn't it? तो उसमें what will be the nature of mixture? Yes, what will be the nature of mixture? And the third, we can take some examples. Now example students, I am giving you one or two example. मैं आपको एक या दो दे रही हूँ. You can find it out more example and you can make your own chart like this. Okay, this will help you a lot. If I talk about constituent of mixture, if they are, it is a solid, both are solid. Okay, if it is a solid mixture, both the constituents, दोनों constituents solid है, तो वो mixture कैसा रहेगा? homogeneous रहेगा कि heterogeneous रहेगा? वो homogeneous भी रह सकता है students, and it can be heterogeneous also. Are you getting it? It can be homogeneous or it can be heterogeneous also. If it is a homogeneous, solid, what will be the example? Homogeneous mixture. Alloys हमने पढ़ा था, they both will be solid only. Heterogeneous if I am talking and both are solid, what could be there? Sand and sugar, ये भी हमने पढ़ा. Am I right? In this way you should remember. Now if I take another as solid liquid, yes, if one constituent is a solid and another is a liquid, then what can we see? There also we can see the mixture can be homogeneous and it can be heterogeneous also. Any example? कोई example दिमाग में आ रहा है? एक solid और एक liquid और homogeneous? Very simple example. Salt in water or sugar in water? Yes. And what about heterogeneous solid liquid? Can anyone think about that? Sand. Can I take sand in water? Sand in water is a heterogeneous. One is solid and one is liquid. उसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, सल्फर इन वाटर. That is also one example, yeah, of a solid liquid mixture constituent whose nature could be heterogeneous. Now solid हो गया, solid liquid हो गया. If I talk about liquid, yes, the third, suppose if I talk about liquid, both the constituents are liquid there. Okay, then again what can you say there? The nature of mixture here also students, it could be homogeneous या फिर heterogeneous भी हो सकता है. चलो अभी think about the examples. What could be there? If I am taking two liquids and it is showing you homogeneous mixture. Milk in water. इसीलिए तो जब दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, we cannot differentiate that it is a water there, है ना, dilute हो जाता है, but you cannot see that whether how much water is there and how much milk is there. So it is a homogeneous example. Now the heterogeneous liquid in liquid, if I want to say, it will be oil in water. Yes, this is very simple. Oil in water, या फिर हम benzene in water also, you can take benzene in water. It could also be one example of liquid with a heterogeneous. Okay, now I will take one more. Suppose एक liquid लिया constituent और दूसरा gas लिया. Okay, if I am talking about one liquid and one gas, here students, you will find only homogeneous type of mixture. कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर. यू कैन राइट इट डाउन. व्हाट इज इट? या फिर आप अमोनिया कर दो. सिंपल, इट वुड बी इजी टू रिमेम्बर. अमोनिया इन वाटर. दिस इज अ लिक्विड एंड गैस मिक्सचर. Then if I take gas and gas mixture, both all are the gases, it is again very common. ये भी homogeneous होगा. And we know I am talking about air. So many gases. आप नहीं देख सकते हो एयर में कि कौन सा गैस है. They are homogeneous. If I talk about one gas and solid, is it possible? Yeah. इट इज हेट्रोजीनियस. यानी एक गैस है और उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल है. क्या हो सकता है? यू नो, स्मोक.
है ना. The smoke, what does it has? It has some particles in it, isn't it? So it is an example of gas and solid, which will be a heterogeneous. So इस तरह से you can make so many other examples also. जितने ज़्यादा examples की practice करोगे, your concepts will be more and more clear there. I hope you understood properly now in today's class what is mixture. Yeah, what are the homogeneous and what are the heterogeneous mixture. After this, in the next class, we are going to discuss again a very important part, that is about the solutions. What are solutions, है ना. हम इसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड्स क्या आता है. So don't miss the next all the classes, because they are all important classes that we are going to discuss. So I will stop here only, students. See you all in the next class. Till then, thank you, students. All the very best for your studies. Keep learning. You can also download the Arth Academy app, yes, from the Play Store. The link is also here, but you cannot take directly. You can type it and you can download it from the Play Store. This is the logo you can find there. When you are downloading, please check whether it is there. This is the, it will come as a, when you will download the app. थोड़ा सा वो check कर लो. What is a, I can say, advantage there. यदि आप ऐप में आते हो, ऐप में डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करते हो, सो यू विल गेट, आपको पूरे कोर्सेज मिलेंगे. वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड, यू गो फॉर दैट कोर्सेज. उसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे विथ ऑल द डिटेल्ड टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन अ वीडियो लेक्चर्स, है ना. अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स रहेंगे. क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स मिलेंगे सॉल्व वाले. यू विल ऑल्सो गेट द नोट्स, यू विल ऑल्सो गेट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड मच मोर थिंग्स विल बी देयर, isn't it? Yes, and here also you can join, you can subscribe the channel if you have not. You can like and you can share it with your friends. If you want to continue, here also you are going to get, but yes, for the notes and question answers, definitely you should download the app. Okay, till then, all of you, bye bye, take care, see you all, bye.